Hello, Assalamu alaikum. Hi Dua, how are you? I am good. How are you? I'm good, Alhamdulillah. Thank you So I Dua think for joining us. no, it's no issue. I really want to talk about the initiative, so I'm very excited to be joining. Thank you so much for coming to us and spreading this word to everyone about this initiative. I think we should wait a while for more people to join and then Yes, start. yes, sure. Let's wait for 2 3 minutes. देखना है तुम्हारे उसमें तो Should we start? Yes, as you said. Okay. So I think first you should start and just give people an idea of what My Hope School is, just in overall. Okay, so my Hope School is an international school chain which is started in Pakistan right now. We are currently working in 6 different countries हम लोग UAE, सऊदीया, टर्की, कनाडा, मलेशिया में पहले ऑपरेट कर रहे थे और अब हम जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट तो the main reason of starting my hope was कि हम जो एक एजुकेशन गैप होता है हर सोसाइटी में एक लो इनकम फैमिली है एक हाई इनकम फैमिली है इनके बीच में जो एक एजुकेशन गैप होता है उसको फिल इन करना ठीक है तो दैट वाज माय होप मेन इनिशिएटिव कि जो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस उसको ख़त्म करना उसको ओवरकम करना और हम ये जो गैप है इसको फिल जहाँ पे एक रॉयल बच्चा हो एक लो इनकम एक फार्मर का बच्चा हो दोनों सेम स्कूल में सेम क्लास Can you speak a bit loudly? I feel like your voice is coming for a come. कैन यू हियर मी नाउ Yeah, I can hear you now. ओके तो मैं यही बता रही थी दैट वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशन फ्रॉम सऊदी अरब फिर हम यूएई में हम टर्की में कनाडा में मलेशिया में हम सो एम ये था कि जो सोसाइटी में एक एजुकेशन गैप होता है एक लो इनकम और हाई इनकम फैमिलीज का कि जो अफोर्ड कर सकते हैं हाई फीस या एक्सपेंसिव एजुकेशन उनको जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है और जो लो इनकम फैमिलीज है जिनके बच्चे नहीं जा पाते उन स्कूल्स में उनको उस तरह से वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती उनको इग्नोर कर दिया जाता है या उनको वही किसी भी जो पुरानी किताबें हैं वही पढ़ाई जाती हैं वही सिलेबस पढ़ाया जाता है तो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम इन बैरियर्स को इन गैप्स को फिल इन करें इन स्टीरियोटाइप्स को ओवरकम करें जहाँ पे एक हाई इनकम एंड लो इनकम दोनों फैमिली दोनों बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं वो सेम क्लास में पढ़ सकें एंड सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले Okay, so that's a really good initiative because Pakistan's education sector is lacking, and वैसे ही private schools exploit parents so much in terms of fees and tuition fees and all of that stuff. So I think it's a really good idea to start something which like like the lower class can also afford because everybody has the right to education. So एग्जैक्टली I'll ask you a few more questions regarding online learning because due to COVID, like recently in the past year or so, online learning has been like everyone's main thing. So how important do you think online learning has become, and how are you linking that to My Hope Schools initiative? ओके सो कोविड हैज़ बीन अ ब्लेसिंग आई वुड से इन टर्म्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग ओके अब ऐसा हो गया है कि आप घर बैठ के वर्चुअल लर्निंग के जरिए एक इंटरनेशनल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं तो
माई होप में हमने जब दूसरी कंट्रीज में स्टार्ट किया और उनका जब हमें फीडबैक मिला तो हमें ये दिखा कि जहाँ पे बच्चों को ट्रैवल करके दूसरे मुल्क जाके पढ़ना पड़ रहा था, वहीं पे माई होप में एक वर्चुअल लर्निंग के जरिए everyone can connect and we can provide this global platform where they can interact with each other. Multi language भी है, multinational भी है, changing their culture, their norms, and it became a very fun learning for the kids. इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, हमने जब ये स्टार्ट किया तो जब हमारे पास कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए, दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू डिफरेंट थिंग्स दैट वाज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स इन पाकिस्तान. तो ऑनलाइन जो पाकिस्तान में एक बैरियर भी बना ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज एंड इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, तो इस एंड प्लस स्कूल्स के पास वो करिकुलम नहीं था, वो मटेरियल नहीं था टू प्रोवाइड दैट इन वर्चुअल लर्निंग. वो वही पुराने करिकुलम फॉलो कर रहे थे जिसकी वजह से वो इंटरनेट पे या वर्चुअल लर्निंग पे भी जो है ना वो अफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे. सो वी डेवलप्ड सच अ करिकुलम कि जहाँ पे वर्चुअल लर्निंग हम बच्चों के लिए मज़ेदार भी बना सकें, बच्चे इसको एंजॉय भी कर सकें. और दूसरी बात है, हम इस तरह से अपना करिकुलम बनाएं कि बच्चे वो जो थ्योरीज, वो जो किताब में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर सकें. Someone commented lack of internet facility, which was a big problem when it came to online learning. Because I remember even in colleges and stuff, if you would say you don't have internet, they tell you to buy it, and that was not everyone can afford that. So I think it's better to balance that in the fees. कि fees फिर कम दे दें so that they can afford these internet facilities and stuff like that. So another question I have is how exactly you all plan to carry out these online classes, considering they are for lower class people? Okay, so our plan is to reach out to people through our social media platform and other marketing strategies, जहाँ पे हम लोगों को बताएं कि वर्चुअल लर्निंग इतनी भी बुरी नहीं है जितना लोगों ने समझा है. क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो इंटरनेट के इश्यूज, वो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, फिर वो टीचर्स के एंड से भी. तो वी हैव सच मैकेनिज्म दैट वी ट्राई टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स. ओके, बट electricity issue is a kind of issue in Karachi and in Pakistan ke jo it's beyond our control. However, we try to move in certain way. हम फ्यूचर में इस तरह से लेके जाएंगे where kids can come to school for such activities like एक दो दिन की activities आए, but we'll have a hybrid system. Yeah, I think that's the best way to go about it, hybrid system. Because somewhere or the other, kids need to come out, kids need to have that physical environment of a school. Okay, तो फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल में ये होता है कि वो इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. सो स्पेशली द प्राइमरी किड्स. ओके, सो दैट्स व्हाट आवर प्लान इज कि हम इसको आगे इस तरह से हाइब्रिड सिस्टम के तरीके से लेकर जाएं, where kids they can come like a day or two जहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज करें एंड देन उनके बाद जो उनके लेसन वगैरह हैं वो अपने ऑनलाइन करते रहें. और इन केस उनको कोई प्रोजेक्ट करना है, दे कैन कम टू स्कूल एंड दे कैन डू दैट. Yeah, I understand. I think that is a balanced way to go about it. So, how exactly is the system gonna work then? If it's hybrid, so how are you kind of combining that exactly? Like, can you explain it? Okay. So in hybrid, what we are going to do is that obviously not all students are going to come to the campus. Okay, if we have this sort of virtual learning where you have different people from different locations, so obviously not everyone will be coming to the campus. Yes, but mainly जहाँ पे campus located है, जहाँ पे kids can access to it, and plus we'll have this timetable sort of thing. When are those days where you will be learning or like virtual learning हो रही होगी? When are those days you will be coming to campus? So that's how we'll be try to balance it out. Maybe for science class, maybe for science or arts class, they need to come to the campus. Maybe so we'll work on these things. Okay. So, since my hope school is based on STEM,
and STEM research and STEM technology. So, can you explain a little bit more to the people what exactly STEM is and how you're incorporating that into the syllabus? Okay, so STEM, as you can, you just told that STEM is basically science, technology, engineering, arts, and mathematics. All these things together, they form STEM. So STEM is basically a 24 first learning system, जिसमें हम बच्चों को बुक्स से टेक्स्ट बुक और थ्योरी से ज़्यादा उनको एम्फेसिस करते हैं कि वो प्रोजेक्ट करें, वो रिसर्च वर्क करें, वो जाएं और वो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करें जो पढ़ रहे हैं. तो स्टेम बेसिकली फोकसेस ऑन दैट. बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी इनोवेशन का जो स्किल्स हैं, उन सब चीज़ों पे काम करते हैं, विच आई फील कि पाकिस्तान में स्कूल्स लैक करते हैं. पाकिस्तान में होता है कि आज लेसन पढ़ाया, होमवर्क दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, ट्रू एंड फॉल्स मैच द फॉलो कर लो. वो करने के बाद बच्चा बच्चा जो है वो बस रट्टू तोता हो रहा है. सो हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा मेन फोकस यही है कि हम बच्चों को बोलें कि आज अगर आपने वाटर का चैप्टर पढ़ा है तो आप जो चैप्टर में पढ़ा है उसको प्रोजेक्ट्स के जरिए, रिसर्च के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको सीखें. दैट्स द मोर बेटर वे अ किड कैन लर्न. Yeah, that's very true because I think हमारे system में mostly like रट्टा मारने का वो बना हुआ है कि you just look at the textbook and learn it and then give the exam without any application or anything. तो इस तरीके से I think the children will be able to apply and like keep that later on in their life, whatever they've learned. So that's a very good way to go about it. So since you mentioned before that My Hope School is kind of global, where else does it operate and where did it originally come from? Okay, so it originally came from Saudi. It operates in KSA, in Dubai, UAE, in Turkey, in Canada, in Malaysia, and now we are in Pakistan. Okay. So it's been operating globally with the same standards in every single country, like same syllabus, same curriculum. Yes, we have the same curriculum, we have the same, you can say, lesson plans and same things. Only the variation comes in terms of the kids. जब हम बात करते हैं, एक बच्चा जो मिडल ईस्ट में रहता है उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है. एक बच्चा जो मलेशिया में है वो अलग है. तो the curriculum, the main focuses of the topic remain the same, but इसके internal concepts जो होते हैं वो थोड़े से changes होते हैं. Like in Malaysia, Saudi, you don't teach them language courses or anything like that, but in Pakistan, you need to learn this. So that's the requirement. So somewhere you can you want to fill the requirement as well. Yeah. Someone asked where are the branches of Hope School in Pakistan? So we are starting virtually in Pakistan. Right now we don't have any plan to start the campus. जब तक कोविड की सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हो जाती, जब तक ये वैक्सीनेशन एंड ऑल दिस प्रोसेस सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक वी आर स्टार्टिंग वर्चुअली. सो राइट नाउ फॉर कपल ऑफ मंथ्स वी विल बी वर्चुअल. Okay. So, so since because as mentioned before, because of COVID, there are a lot of online learning platforms. So, how do you think My Hope School is different from all the other ones? Why should people pick My Hope School over other online schools? नंबर वन इज द प्राइस पॉइंट. हमारा मेन जो पाकिस्तान में स्टार्ट करने का मकसद था वो ये था कि हम प्राइस पॉइंट जो है ना, इवन ऑनलाइन स्कूल्स हैं बट दे आर चार्जिंग व्हाट 15,000 16,000. ओके, so my hope is coming up with a very low price point. We are charging in 1,500 rupees. That's it. उसमें आपके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, उसमें आपके कोई एग्जामिनेशन चार्जेस या आपके एक्टिविटी चार्जेस, nothing is there. It's only 1,500. You don't need to buy any book. Okay, you don't need to spend on any extracurricular activities or anything. It's just 1,500, and the rest of the thing is on us. Whether it's to provide the learning material to the kids, या उनकी कोई एक्टिविटीज हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट जो भी स्कूल में इंटरनली होता है वो सब हमारे ऊपर है. यू जस्ट नीड टू पे 1,500, दैट टू जस्ट द ट्यूशन फीस. Then that's a very reasonable price because you're not even asking for textbooks or anything like that. You're not even paying for that.
So, what since you've already told us what the objective of My Hope School is, what do you aim to achieve through My Hope School? Like, what do you think after the initiative and after all the classes, what will it bring to society and will work-class people? Okay, so in the end, the main thing is to fill in the gap. ओके ऑब्वियसली जो डिजर्विंग बच्चे हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो ऊपर नहीं आ पाते क्यों क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन नहीं है वो उन तालीमी इदारों से नहीं आ रहे जिनके बड़े बड़े नाम हैं वो आगे स्ट्रगल करते हैं अपनी जॉब्स में वो आगे स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में बिकॉज उनको उस तरह की तालीम नहीं दी गई है हमारे यहाँ बहुत फैसिलिटाइज किया जाता है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव रिच स्कूल उन बच्चों को पहले जो है ना प्रायोरिटी पे रखा जाएगा फिर बाद में दूसरे बच्चों को एंड लीस्ट पे होंगे वो बच्चे जो बहुत लो इनकम फैमिली सो हमारा इनिशिएट यही है कि हम उन बच्चों को नीचे से ऊपर लेकर आए उनको हाईलाइट करें इवन हम न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि कोई किसान मतलब कोई फार्मर की बच्ची है उसने टॉप किया मैट्रिक में CSS में ACCA में ये बच्चे बहुत मेहनती हैं दे डिजर्व आई थिंक मोर देन वी डू वी हैव एटलीस्ट Yeah. privileged they are not even that much capable so I think उन बच्चों को हाईलाइट करना उनको सोसाइटी में आगे सपोर्ट करना है तो आई थिंक एजुकेशन इज द बेस्ट वे यू कैन Okay. So since this is all online based, so teachers will be supplied by you guys only. So what exactly are the qualifications of these teachers, and will you be telling, like, will you be putting it out there, like, ये teachers कहाँ से qualified हैं, कहाँ के graduates and stuff? So we have teachers that have done the graduation from recognized university, like which are recognized by HSC, say recognized हैं उन university से हैं. We also have teachers जो fresh graduate हैं, they have a lot of potential. They are nicely trained by our team. जो हमारा curriculum है, जो हमारा way of teaching है, उससे पूरा वो training process होता है उनका पूरा recruitment process होता है. But we have graduate teachers. We don't feel और we don't believe कि जो teachers हैं वो उनके पास कोई 8 साल 10 साल का experience होगा तभी हम उनको hire. We are also providing a opportunity, a platform जहाँ पे fresh graduate who want to pursue their career in teaching वो उसमें वो यहाँ पे apply कर सकते हैं and we see the potential in a candidate. We don't see their experience or which university they have studied. Okay, that's a very good way to do it because इतने सारे teachers होते हैं with बड़ी degrees and then they aren't able to teach properly or control the kids. Because I think in online learning also teachers don't know how to operate the laptop ऐसे कोई मसला आ जाएगा, so you have to really pick and choose for online learning. So I think you mentioned this before, but maybe you can elaborate on it a bit more. Why exactly you started My Hope School? Besides the reason for providing education for those who can't afford it, other than that, is there any other specific reason why you decided to go with My Hope School? Okay, so I was very passionate to do something in education. तो मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देखती थी कि कहीं पे एजुकेशन सेक्टर में कुछ जो है ना कुछ ऐसा करूँ विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी तो वी केम अप विद दिस आइडिया ऑफ माय होप देयर इज वन इंसिडेंट मेरे घर में एक मासी आती थी उसको बहुत शौक था डॉक्टर बनने का लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाई क्यों क्योंकि उसके माँ बाप वो मेडिकल की फीस नहीं पे कर सकते थे और वो मैट्रिक के बाद जो है ना इंटर नहीं कर पाई और उसके अम्मी अब्बू ने उसको काम पे रखा तो वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनी मेरे लिए कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें जहाँ पे इन लोगों के जो ड्रीम्स हैं इनके जो व्हाट दे आर रियली एम्बिशियस अबाउट अगर हम इनको वो रास्ता दे सकें इनको वो फैसिलिटेट कर सकें एंड दे कैन यू नो अचीव इन देयर गोल्स इन देयर लाइफ आई थिंक दैट वुड बी लाइक अ हैप्पी मोमेंट इन माय लाइफ मैंने अपनी सोसाइटी को कुछ गिफ्ट बैक किया So how did you come up with the name My Hope School? Is there any story behind that? Hope it became like you can say
एक लोगों ने खुद कहा कि दिस स्कूल बिकेम माय होप एंड तो इस तरह से ये नाम जो है ना माय होप स्कूल पड़ गया जब लोगों को इसमें एक पोटेंशियल दिखा लोगों में इसमें उम्मीद Hmm. दिखी कि अब हमारे बच्चे भी वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं हमारे बच्चे भी कुछ तालीम में आगे बढ़ सकते हैं सो फ्रॉम दैट द माय होप स्कूल नेम वाज गिवन Oh, okay. Makes sense. So the affordable price point that you have set, since it is very affordable, but I don't know if it'll pay fully for the expenses and stuff like that. So is there any external funding that you guys are getting to operate My Hope School? okay there is no external funding I'll be very honest all the financial investments and all the financial things are being kept secret. We don't disclose that. Oh, okay, okay. That's all internal stuff. Hmm. Okay. So is there anything else you would like to talk about My Hope School in particular? Because I don't have any more questions to ask. So thank you, Dua, for having this live session with us and Yeah. support initiative with us and all the viewers that are watching. उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माई होप के बारे में लोगों को बताएं लोगों को पहुँचाएं Hmm. वो फैमिलीज जो कोविड में सफ़र कर रही हैं जिनके माँ बाप की जॉब नहीं रही बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं और उनके पास अब कहीं तालीम हासिल करने का कोई ज़रिया नहीं है और आप अगर वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम से भी तंग आ गए हैं जहाँ पे आपके बच्चे सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं और रट्टे लगा रहे हैं और आप कुछ अफोर्डेबल येट यू कैन से अच्छी तालीम के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं देन आई थिंक माय होप इज योर आंसर बिकॉज Everyone has the right to education. So the affordable price point is to give everyone that right. जो I think Pakistan में दे नहीं पाते लोग because of corruption and whatnot in the education sector. So it's up to us to make it a better place in terms of education. एग्जैक्टली एंड प्लस माय होप इज नॉट हियर टू अर्न मनी बट वी आर हियर टू एजुकेट हमारा मेन Yeah. मकसद है कि हम हर घर तालीम पहुँचाएं जैसे है ना कि हर घर में रोशनी पहुँचाए ऐसे हमारा मेन मकसद है कि हर घर में हम तालीम That is very good. That is a very good way to put it. I would encourage everyone to follow the My Hope School's Instagram page and the Facebook page just to stay updated with everything. And because of the affordable price point right now, अभी तो summer चल रहा है वैसे भी, so if anybody wants the education at a lower affordable price, then My Hope School I would like definitely 100% recommend for it because they also focus on STEM learning, which is very rare in schools these days. So I think it would be a really good idea for people to sign up for My Hope School. so thank you Thank Dua you so once much. thank you so much Thank you. Allah Hafiz. Hafiz